नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तरफ से जो है कई तरह से विपक्षी नेताओं ने समर्थन दिया और कई ऐसे विपक्षी नेता रहे जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर के मोर्चा खोला कि आखिरकार नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति मुर्मू क्यों नहीं कर रही हैं। तो देखिए, नए संसद भवन का उद्घाटन तो ना सही, लेकिन हाँ, राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो एक उद्घाटन करती हुई ज़रूर नजर आई और ये उद्घाटन की तस्वीर हम आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहेंगे। तो देखिए। To be among you here today. I have an old association with the people of Jharkhand and I find their warmth amazing. I am grateful to you all for your warm welcome and for making me feel as if I am back at home once again. Today, the Jharkhand High Court is crossing an important landmark with the inauguration of its new building. In its earlier stage, it was set up in 1972 as the circuit bench of the Patna High Court. This High Court was set up after the state of Jharkhand was carved out of the state of Bihar in November 2000. In barely 2 decades, it has grown impressively and its sanctioned strength of judges has more than doubled from 12 to 25. The building from where it was functioning was once meant only for the circuit bench. Befitting its new profile, there was obviously the need for larger, the more modern infrastructure to efficiently dispense justice. The new building is truly impressive with its modern amenities and state-of-the-art physical infrastructure. It has a residential complex for the judges and the members of the registry. Apart from lawyers' chambers and the State Bar Council building. What is really notable is that the entire campus is designed and constructed by keeping the principle of energy conservation in mind. On top of it, the afforestation along with the presence of a variety of trees makes it truly a green campus. I am sure this new building of the Jharkhand High Court will inspire other public and private organizations to make the environment the central factor in their projects of similar nature. It is also a necessity in the age of global warming. I congratulate everyone who has contributed to making this project a reality. I find the new campus visually pleasing as well. For those of you working here, it should be a pleasant experience to expend your working hours in this beautiful campus. In the context of working conditions, I would like to point out a trend we have witnessed in recent years. Many court buildings have opened creches so that our sisters can balance their family responsibilities in their work. I am sure the new building would have a provision for a creche. Ladies and gentlemen, this court is a temple of justice. The people of this nation look at courts with faith, and even the language of law reflects that feeling when we use words like pray. People themselves have given courts the power to dispense justice. That is to say, to set wrongs right. They come here with a prayer to get what is just. It is a very serious responsibility indeed. That brings us to a topic on which I have often spoken, namely the question of access to justice. Improving it is always a work in progress. We must constantly endeavor to find new ways to continue that process. Access has many aspects. Cost is among the most important of those. It has been observed that the expenses of litigation all too often
put the cost of justice out of reach for many citizens. In response, various authorities have taken a number of welcome initiatives, including the opening of free legal counseling cells. Many lawyers to offer pro bono services. I urge all stakeholders to think innovatively and find new ways to expand the reach of justice. Another aspect of access is language. मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश में बात करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और हिंदी में यहाँ स्पीच दिए। मुझे लगता है ये आज के लिए नहीं, आगे भी हिंदी में ही जो स्पीच देने से मुझे लगता है अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे जब हिंदी निकलेगा दूसरे जो जैसे वो भी उसको जरूर फॉलो करेंगे। थैंक यू। Another aspect or access is language. As English has been the primary language of courts in India, a large section of the population is left out of the process. The language of justice should be inclusive so that the parties to the particular case as well as interested citizens at large can become effective stakeholders in the system. The Supreme Court made a worthy beginning when it started making its judgments available in a number of Indian languages, and many other courts have also been doing so now. Needless to say, in a state like Jharkhand with rich linguistic variety, these factors becomes all the more relevant. I am sure the authorities are considering ways to make the court processes more accessible to people who are more comfortable with languages other than English. In overcoming these and other hurdles before access to justice in general, two factors are bound to be highly useful. One is technology, which is changing our world by the day. This new building has the latest technological facilities, and that will prove highly helpful. The second factor is enthusiasm, especially of the younger generation in the field of law and justice. They are the ones who will come up with innovations that will improve access to justice. Ladies and gentlemen, related to the access to justice is the question of under trials. I spoke about it on the Constitution Day last year. I cannot help but talk about this matter close to my heart, since I am addressing a distinguished gathering of judges, legal luminaries, members of the bar and other dignitaries. One of the reasons behind the problem is that courts are overburdened, which also hurts access to justice. I understand the problem is complex, yet the fact remains that a large number of people languish for years in prison as under trials. Prisons are overcrowded, making their life all the more difficult. We should address the root cause of the problem. When I say we, I include the whole society. Still, it is good to see that the problem has been noticed widely. The issue is being debated, and some of the best minds of the legal fraternity are seized with the matter. I am glad to note that several steps have been taken to make justice delivery system more accessible and inclusive, especially for women of different segments of the Indian society. I am confident that together we will soon be able to find a way out. Ladies and gentlemen, I congratulate the people of Jharkhand, judges and advocates of the High Court moves to this
magnificent buildings which symbolizes the beauty and power of justice. I am confident that this new building will bring with it a new energy, and the judges, lawyers and administrative staffs will perform their duties with greater dedication, commitment and efficiency. Before I conclude, I say something. मैं आज इसीलिए यहाँ कहना चाहती हूँ कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट और बहुत सारे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, एडवोकेट्स, लॉयर्स, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में फाइनल होता है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट लेके जाते हैं। जो केस जिनके फेवर में है, जो पॉजिटिव है, वो नाचते हैं, गाते हैं। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, चलिए देर है लेकिन अंधेरे नहीं, इसीलिए वो खुश होते हैं। लेकिन उनका खुशी कुछ दिन में ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए वो खुश होते थे वो उनको मिलता नहीं। जिसके लिए इतने दिनों से समय, रुपया बर्बाद किए, कितने रात में ही सोए इंतजार में, वो आज मिला, इसीलिए वो खुशी है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो वो खुशी एक्चुअल खुश में कन्वर्ट नहीं होता तो वो फिर दुखी हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी गांव में से आई हूँ, वहाँ एक छोटी सी मेंबर में थी फैमिली काउंसलिंग सेंटर के। हम क्या करते थे, कुछ केसेस फाइनल होने के बाद हम रिविजिट करते थे। वो जो केस हम फाइनल किए एक्चुअली वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो फैमिली वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं। ये जो प्रोविजन है कि नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया, लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी चंद्रचूड़ साहब से, चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने बोले कंटेम्प्ट केस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं। कंटेम्प्ट केस करने के बाद फिर शुरू से मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा, वही मुझे फिर 20 साल जाना पड़ेगा, फिर 7 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बैठे हैं, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के, गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है, क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ। मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा। उनको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते। अभी पहले तो पहुंच पाते थे, लेकिन मैं भेज देती थी, वो कहाँ गायब हो जाता था मुझे पता नहीं। लेकिन अभी मेरे पास जो है मैं जरूर। उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने अपनी तरफ से एक भाषण भी जारी किया। उनका बयान आपने सुना। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जब वो तमाम जगह पर पहुँच करके अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती हैं, तो आखिरकार संसद भवन के उद्घाटन में वो अपनी मौजूदगी दर्ज क्यों नहीं करवा सकती हैं? आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।